important है for those who are working professionals or the students who have their commitment with their college, final year going students. We know कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है कैट के एग्जाम के लिए फॉर कैट 2025. So how to cope up with CAT preparation along with your college studies or your job commitments, इसके बारे में आज थोड़ी बात करेंगे. एक टेस्टिंग चल रही है छोटी सी. हाँ, आई होप एवरीथिंग लुक्स गुड. Whatever questions you have, you guys can put it in the comments, maybe in the YouTube, maybe in the chat of Zoom webinar. I'll pick it from there and I'll definitely entertain and try to help in best possible way. I've created a small PPT which has all the important points that I wanted to share for those who are preparing CAT or other major management tests, let's say ZAT, SNAP, and MAT, or to be honest, any preparation, any preparation of any examination, any competitive examination, these tips would definitely help. Hello, Navdeep, working professional here. Very good. So this session is going to help you a lot, I believe. Start करते हैं. देखो, working professionals and you're targeting CAT 2025. Also, let me know which year you're targeting. 2025 ही hopefully most of you are targeting CAT 2025. The first thing बहुत important है ना for you guys, final year college student. Very good, Dashna. Oh, अच्छा, also tell me, I know कि job वालों का तो commitment होता है, 9 to 5 होगा या फिर night shift होगा, but being a student, आपका क्या commitment है in your college? How much hours you go to college, और क्या क्या projects, internships जो compulsory आपका time लेती है? Do let me know. 2025, Navdeep. अच्छा देखो guys, let's be very honest, let's be brutal with this. कि if you're targeting CAT 2025 now, you don't have much time left, right? If you have not started, so you don't have any time, any buffer period right now. आपको start करना पड़ेगा. Let's say you are an average student, even if you're little bit on the brighter side now, you have roughly 4 months and 20 days left. These are 140, 145 days. Very good. 4 hours internship going on currently. Right. Very good. So that is not 4 hours. Internship for 4 hours की होगी, but उसका जो प्री पोस्ट प्रिपरेशन है, उसमें 1-1.5 घंटा कम्यूट में आपका टाइम जाता होगा. एंड डेफिनेटली अगर आप 4-5 घंटे का इंटर्नशिप कर रहे हो, तो फिर आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए. सो दैट इज क्लोज टू 6.5 hours, विच इज रफली अगर आपका 8 घंटा स्लीप शेड्यूल निकाल दे तो 16 आवर्स में 6 आवर्स, दैट इज रफली 35% ऑफ योर टाइम. वेरी प्रेशियस टाइम. कंप्लीटेड अरिथमेटिक करेक्टली एंड डूइंग नंबर सिस्टम, सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट हैव बफर टाइम. 5 महीने का टाइम है. You need to create a schedule. Sit with yourself for a day. Okay. Stop preparing randomly, Navdeep. Or if you have made some plan, that's very good. You need to start with a plan. Without plan, you cannot move forward. Okay. You have to plan your day. देखो guys, आपको पूरा का पूरा दिन प्लान करना है. नॉट ओनली डेज, आपको पूरा का पूरा मंथ प्लान करना है. आई वोंट से कि आप अगले 5 महीने प्लान करो. ठीक है. यू सेट अ गोल फॉर अ मंथ कि फॉर दिस मंथ आई विल बी डन विद अरिथमेटिक. नाउ इफ यू कंसिडर कि आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ, एंड दिस इज व्हाट डेट इज टुडे इज 5th of July. So 2 weeks का प्लान कि by 19th of July I would be done with arithmetic starting from today. उसमें भी आपको माइक्रो मैनेज करना है कि अगले 2 दिन में मेरा क्या होना चाहिए, कहां से होना चाहिए. नॉट ओनली द टाइम, नॉट ओनली द शेड्यूल, बट द रिसोर्सेज यू हैव टू प्लान. बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट रिसोर्सेज यू हैव टू प्लान बिफोर हैंड. ये नहीं कि सर जब हम प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, व्हेन वी विल बी डूइंग सम टॉपिक ऑफ अरिथमेटिक, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन कहां से करने हैं. एंड यू हैव टू प्लान इन सच अ वे कि you have to decide number of questions you are going to attempt.
let's say you have to decide profit and loss. May I'll be solving close to 40 questions from this particular book, 15 questions of PYQs of 2024, 2023, 2022. That's it, and then I'll move ahead. आपको इस तरीके से प्लान करना पड़ेगा. Okay, and you have to prioritize your weaker areas. आपका जो वीकर एरिया है ना, उसको फिगर आउट करो. देखो, एक होता है प्रिपरेशन, ठीक है, दूसरा इंप्रेशन ऑफ प्रिपरेशन. ओके, इफ यू डोंट हैव अ प्लान ना, आपका प्रिपरेशन वुड गो नोवेयर. ट्रस्ट मी, most of your time would be gone, would be spent on if you have not planned properly. So 80% of your time will go on 20, 25, 30% of the syllabus. That happens and that will happen. Sit with yourself, take couple of days, एक दो दिन ले लो, plan the entire syllabus, plan the entire schedule, plan the entire resources, get them beforehand. Okay. Figure out your weak areas. Figure out your weak areas. Yes, Darshana, देखो, weak areas को figure out करो. There is a weak area. Obviously, there are three sections. One of them would be your favorite of the three, and one of the sections you would be afraid of. So what I would recommend, I cannot micromanage for you guys. Okay, I cannot micromanage. So broader level pe how you should divide your day. Divide your day into two halves. First half, let's say 7 in the morning to 2 p.m. in the afternoon. Second half is 2 p.m. to whenever you go to bed. Let's say 10, 11. Don't go too late to bed. उसके बारे में आगे बात करेंगे. So divide your days in two halves, okay? And daily you have to take care of two sections. Suppose your quant is weak, as you mentioned, कि आपका quant weak है. So take quant in the first half on daily basis. Morning को सुबह उठे till 2 p.m. you will do only quants, and not only quants in the right direction with relevant resources. Properly plan किया हुआ. You need to decide number of questions as well. मैंने आपको पहले बताया. There is no end to questions. If you would have started in the month of December or November, so I would have recommended solve 200, 300 questions per topic. But given the constraint of time in our hand, I strongly recommend to solve anywhere between 30 to 50 questions, not more than that. Even there is urge to solve more questions. Trust me, 30 to 50 questions are good enough to clarify your concepts, to strengthen your concepts. 30 to 50 questions based on the gravity of the topic you have to decide beforehand. So profit and loss, I'll solve 40 questions. Time, speed and distance, I'll solve 50 questions. SICI, I'll solve 25 to 30 questions. Mixture and ligation, I'll solve 25 to 30 questions. Based on the gravity of the topic, determine the number of questions, attempt them. Okay, in first round, second round में आपको revision का मौका मिलेगा, and in mocks you will again come across variety of questions, so don't worry about that. आपका target सबसे पहले होना चाहिए to cover the entire syllabus once. Completed arithmetic, currently doing number system, very good. And set realistic goals, as I said. And don't over stress. Again, उसके बारे में self care के बारे में आगे बात करेंगे. I have that slide with me on self care as well. So what about repeaters? Scored 86 percentile last time. 86 percentile last time. देखो, 86 परसेंटाइल, अगर 86 परसेंटाइल की तुम बात कर रहे हो, तो यू वर बी समवेयर अराउंड, आई हैव दिस मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, तो यू वुड बी समवेयर अराउंड 55 के आसपास, राइट आर्यन? यू वुड बी समवेयर अराउंड 55. हाँ देखो, इधर यू हैव दिस, आई हैव दिस 85, 80 percentile was around 44, and this you would lie somewhere between 58 to 44, hopefully. वहां पर डैश है तो 51. तो 51 is 17 questions. There is a lot lot of scope of scoring in your case. And last time का, if you would let me know, welcome Sia, let me know कि आपने कितना डेडिकेशन दिया था. Did you put your 100%? And दूसरा, you did it on your own, या you were enrolled somewhere, anywhere, but you were enrolled somewhere? Aryan, do let me know.
मीनवाइल आगे बढ़ते हैं। फोकस ऑन वीक एरियाज, ऐसा ही सेट जो आपका वीक है ना, क्वांट, जैसे देशना ने बोला उसका क्वांट वीक है, डेली मॉर्निंग में ना क्वांट लेके बैठो, और इवनिंग में ना अल्टरनेट, मंडे को क्यूए डीएलआर ले लिया, ट्यूसडे को वर्बल ले लिया, तो अल्टरनेट बिटवीन द अदर टू सेक्शंस इन द सेकंड हाफ। 5 months of preparation, no, did you put your 100%? Because still you are left with 5 months, and I don't want to poke you, देखो, even I was a student years back, okay, and it's not my style to poke students, but jahan flaw hai, don't expect any pampering also from my side. No, not 100%, I'm aware about that. So if you are not putting your 100%, expect 0% results, and you'll get 0% results. क्योंकि क्योंकि 5 months and 100% can fetch you more than 99 percentile if you are an average student. If you are very weak, so yes, that time might not be sufficient. But if you are somebody who is 777 now, and 5 months of full dedication, you can truly be above 99 percentile. So again, you have 5 months left. वापस जागे हो तुम, 5 महीना बचा है तब। तो ये कैजुअल अप्रोच बेटा, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अभी टाइम है, यू डोंट हैव टाइम टू जगल बिटवीन डिफरेंट वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस, या फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स या डिफरेंट फैकल्टीज। अब ना 2-3 दिन का टाइम लो, एज आई सेड, 2-3 दिन का टाइम लो और सेटल डाउन करो। देर आर मेनी गुड पीपल वर्किंग ऑनलाइन ऑफलाइन, सेटल विथ somebody. I have worked on my foundation till now and secured a government job in between to improve profile. Okay. हेलो सर, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत इम्प्रूव्ड है, काफी इम्प्रूव्ड है। Demented, sir, I have from last 2 years. I am in immense pain every second. I try to. Okay. We can talk about that one-on-one, Demented. And yes, practice consistently. When I say consistently, you can start with 4 to 5 hours a day, and moving forward, you'll have to increase it. It increases on your own. I mean, day one से don't keep in your mind कि मुझे 8-10 घंटे पढ़ना है, okay? But start with 3-4 hours a day. 3 घंटे का टारगेट रखो, and after a week, you'll automatically figure out कि you have stretched your 3 hours to 4 hours, then 5 hours, then 6 hours. That will happen automatically. So start with some realistic goal. That will automatically happen. Sir, I attempted last two mocks by Testbook with 67 and 81 percentile in each. But how do I analyze my strengths and weaknesses? How do you analyze your strength and weaknesses? Oh, okay. Okay, we'll talk about that. देखो, strength and weaknesses, तो सबसे पहले you are aware कि what topics you have covered. What topics you have covered. And दूसरा, what you can do कि whenever you analyze any mock ना, तो while doing it, आप मॉड्यूल्स के सामने देखो कि उस मॉड्यूल से कितने क्वेश्चन है, एंड हाउ मेनी यू गॉट करेक्ट। लेट्स से अर्थमेटिक से अगर 22 में 8 क्वेश्चन है, तो हाउ मेनी यू गॉट करेक्ट? 8 में if you are getting n number of questions and you are getting more than 60% of it correct, means that is doable, that is good enough. जहां पे आपका 30% से भी कम जा रहा है ना, सेक्शन मॉड्यूल वाइज, सपोज अलजेब्रा में देयर वर 7 क्वेश्चंस एंड आपने केवल 2 करे, राइट, मींस अलजेब्रा इज योर वीक सेक्शन। सो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है ना, मॉड्यूल वाइज चेक करो, नॉट टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज वुड बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे अलजेब्रा में यू हैव मल्टीपल टॉपिक्स, लॉग है, इक्वेशंस है, तो कभी इक्वेशन से इजी क्वेश्चन आ जाएगा, और लॉग से डिफिकल्ट, तो कभी लॉग से डिफिकल्ट आ जाएगा, इक्वेशन से इजी आ जाएगा, मतलब। तो फाइंड आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस मॉड्यूल वाइज। How much questions were in the examination or in the mock you attempted, and what percent you got right, what percent you attempted, and what is your accuracy.
इस हिसाब से यू कैन फिगर आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। सर प्लीज मेक अ वीडियो कि एग्जाम टाइम में क्वांट में कैसे क्वेश्चन को स्किप करें, क्योंकि 16-17 क्वेश्चन करने होते प्लीज। नहीं, उस पे वीडियो बनाने वाला हूँ मैं सिया, कि एक एक ना मॉक में लाइव दूंगा। ठीक है, एक मॉक में लाइव दूंगा, और उसमें ना कैसे क्वेश्चन को रीड करना है और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन को भी स्किप करना है। आई फोकस ऑन दैट। सो वो एजेंडा में है। And yes, working professionals and students, you need to stay organized. For that, you can take help of planner or calendar. Also, you can make a to-do list. बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप योर प्रिपरेशन ऑन ट्रैक। ट्रैक पे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इट इज सच अ टाइम कि आप हल्का सा ऑफ ट्रैक हुए, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू स्टॉप फॉर नोबडी। द टाइम वी आर लेफ्ट विथ वो निकल जाना है। इट इज नॉट गोना वेट फॉर। नहीं, आई एम गोइंग टू डू दैट, वो है एजेंडा में सिया। वो आ जाएगा, हफ्ते 10 दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी इट इज सच अ बर्निंग सिचुएशन वी आर इन, कि इवन इफ वी गेट ऑफ ट्रैक फॉर अ वीक ना, तो यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस, राइट। सो कि दोस्त की शादी हो, आपका कोई ट्रिप हो, ट्राई एंड कैंसिल एवरीथिंग। ट्राई एंड कैंसिल एवरीथिंग। अभी 4.5 months is preparation, 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 job, 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 college, 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 and preparation, preparation. That's it. सर डीआई सीखने के लिए कुछ सजेस्ट करिए। डीआई सीखने के लिए कुछ सजेस्ट करे, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इधर टाइम मैनेजमेंट का पहले देख लेते हैं गाइस। वर्किंग प्रोफेशनल्स गाइस, आपको ये करना पड़ेगा, एल्स यू विल नॉट बी एबल टू कोप अप विद द सिलेबस। शेड्यूल तो बनाना है। आई एम पुटिंग इट अगेन एंड अगेन, क्रिएट अ शेड्यूल। अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया, फॉरगेट अबाउट इट। फिर द एंटायर थिंग विल जीरो डाउन टू लक। अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया, उसके हिसाब से प्रिपेयर नहीं किया, everything will go down to luck then. Your hard work will have minimal role to play in your on your D day, in your actual CAT examination then. अगर आपने शेड्यूल नहीं बनाया, तो आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन, 1-2 दिन का टाइम ले लो, शेड्यूल बनाओ, डेडलाइंस सेट करो, रियलिस्टिक डेडलाइंस, फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। और एक्स्ट्रा एज के लिए, नॉट एज, आपको कोप अप करने के लिए आपको ये टाइम यूज करना पड़ेगा। कम्यूट टाइम, आप अगर कंपनी के बस से आते जाते हो, अगर आप खुद की बाइक से आते जाते हो, तो भी कान में, इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि बाइक चलाते वक्त जनरली नहीं होता है। बट इफ यू कैन, थोड़ा थोड़ा ना सुनते जाओ, वर्बल के लेक्चर सुनते जाओ, 2x स्पीड पे सुनते जाओ। यूटिलाइज योर लंच ब्रेक्स। इट इज वेरी ऑकवर्ड ऑफिस में लंच ब्रेक में पढ़ाई करना, बट फॉरगेट अबाउट दैट। यू हैव टू यूटिलाइज योर लंच ब्रेक, यू हैव टू यूटिलाइज योर सुट्टा ब्रेक, टी टाइम ब्रेक, और इवनिंग टाइम, ये सब आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। मेजर इशू, और क्या, इवन आई वॉज वर्किंग, एंड मुझे पता है कि इट्स अ मेजर इशू, एंड वो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। एंड लास्ट में ना, यू विल हैव टू टेक सबैटिकल लीव, कीप योर सीनियर्स इन लूप। लास्ट के 1.5 to 2 months आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि एक सबैटिकल लीव ले लेना, ओके। एंड फुल फुल फोकस के साथ लास्ट के 1.5 months, एटलीस्ट 45 days का सबैटिकल लीव इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर टिल एग्जामिनेशन विथ योर जॉब, इट्स वेरी डिफिकल्ट। एक काम कर सकते हो, फोकस ऑन हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज, जिनका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और दूसरा ये कर सकते हो कि आप आपका स्टेमिना इंप्रूव कर सकते हो, साइड बाय साइड। आपका स्टेमिना थोड़ा सा इंप्रूव करो, ठीक है, उसके बारे में आगे बात करेंगे। एंड फोकस ऑन हाई इंपैक्ट एक्टिविटीज। आप वीक एरियाज को फिगर आउट करो और उनपे ज्यादा वर्क करो। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहो। मॉक टेस्ट
or suppose the preparation that you have done will take you out of 100 till 30, so mock test will take you till 90. The major part of your journey में आपको जो help करेगा is mock test. If I have to put it in a other way, so if there is a student who has only studied and has very less practice of giving mocks, and there is another student Mr. B जिसका प्रिपरेशन मिस्टर ए के जैसा नहीं है, बट उसने मॉक्स दे के स्ट्रैटेजीज बना ली है अच्छी खासी, राइट. He knows what to attempt, what not to attempt. Okay, he knows what to skip, he knows how much time to spend, he knows किसी क्वेश्चन को शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, how we can use options. Okay. uh, Trust me, the second banda है ना has potential to score up to 8-10 percentile more than the first guy. Mock taking strategy, mock attempting strategy plays a very important role, is more important than covering the syllabus. Syllabus to cover karna hai, but two students with the same level of preparation, one very good in mocks, attempted ample number of mocks, can beat the first guy any given day. Since there is 5 months, my work experience not going to add a value. Can I do a certification? Because nothing will add value. Mukundha, nothing. No, neither digital marketing, nor a certification course on data analyst. Chota mota koi bhi finance course, tally, nothing is gonna help you now. Everything is gonna add up to something, provided, matlab significant help, provided you have 2-3 years of gap और आपने करा हो. Okay. एग्जाम के जस्ट पहले, एंड इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, अगर 2-3 साल का गैप है तो हाँ, इट माइट हेल्प. बट इफ इट इज नॉट, आप स्टूडेंट हो, अगर इफ स्टूडेंट हो इन योर फाइनल ईयर, तो नन ऑफ द सर्टिफिकेशंस आर गोना हेल्प. They don't expect a final year students to come up with certain certifications. They don't expect. So the best thing that you can do is focus on your preparation, get the maximum percentile in your hand, and that would be the best possible thing you can do in given 5 months, or let's say 4.5 months. Mocks का analysis बहुत important है. If you attempt a mock in 2 hours, another at least 2.5 to 3 hours should go in the analysis. Analysis does not only involves कि क्या question उसका solution देख लिया. Analysis also involves कि हाँ, अगर मैं skip कर करके करता तो मुझे क्या करना चाहिए था. Analysis also involves to rate the question based on their difficulty level. Most of the students do this. हाँ, 22 क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को रेट कर रहे हैं डिफिकल्टी लेवल पे. ये सबसे इजी, ये दूसरे नंबर, ये तीसरे नंबर, ये चौथा नंबर, दिस बीइंग द हार्डेस्ट. रेट क्वेश्चंस. सॉल्यूशन तो एनालाइज करना है, उसका शॉर्टकट क्या हो सकता था वो तो एनालाइज करना है. यू हैव टू रेट क्वेश्चंस, एंड अल्टीमेटली यूल फिगर आउट कर रहे हैं यार, इफ आई हैव रेटेड क्वेश्चन ना, तो क्वेश्चन तो शुरू में काफी इजी इजी है. दैट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस. एंड फ्यूचर में ना, व्हाट यू विल डू इज यू विल स्टार्ट स्किपिंग क्वेश्चंस, क्योंकि यू नो कि यू कम टू नो आफ्टर डूइंग दिस फॉर 5-7-8 मॉक्स कि यार हर एक मॉक में एटलीस्ट 13-14 क्वेश्चन होते हैं जो इजी होते हैं. एंड व्हेन यू कम टू नो दिस ना, यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दोज इजी क्वेश्चंस. यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर योर इजी क्वेश्चंस. बट अगेन, ये वही बच्चा कर सकता है whose concepts are sound. Giving cat as a fresher entering into MBA is good or after work experience? Oh, 19-20 का फर्क है, बट वर्क एक्सपीरियंस. ओके, 19-20 का फर्क है, ठीक है. बट ऐसा रिकमेंडेड नहीं है कि आप फ्रेशर हो तो अब, सिंस वर्क एक्स वालों का थोड़ा अपर हैंड होता है, तो 2 साल 3 साल का वर्क एक्स कर लो फिर देंगे. नहीं, नहीं. व्हेन आई से दिस, मेरा मतलब क्या है कहने का, आई विल आल्सो इलैबोरेट कि सपोज वर्क एक्स एंड फ्रेशर. तो वर्क एक्स जिसके पास है ना, क्वालिटी वर्क एक्स, और उसके एडमिशन के चांसेस ज्यादा है. उसके एडमिशन के चांसेस ज्यादा है. वंस यू आर इनटू द गेम, वंस यू आर इनटू द गेम, उसके बाद सब कुछ सेम है. उसके बाद वर्क एक्स क्या और फ्रेशर क्या, बस एडमिशन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं वर्क एक्स के. तो सर क्या मैं वर्क एक्स लूं?
नहीं, यू शुड ट्राई फॉर इट राइट नाउ, क्योंकि अगर अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका 2 साल वर्क एक्स लेने में आपको जो वैल्यू ऐड होगा ना, उससे ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगा 2 साल में। तो ऑब्वियसली वो बेटर है, बट उसके लिए ये रिकमेंडेड नहीं है कि आप वर्क एक्स लेने जाओ। सर, प्रिपेयरिंग फॉर कैट इनफ फॉर दैट एज वेल, और शुड आई प्रेप फॉर इट? एक एक सेक्शन अलग है जैट में, अगर तुम देखोगे तो क्रिटिकल रीजनिंग का क्वांट मोर और लेस सॉर्टेड है। DILR थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है जैट में, और क्रिटिकल रीजनिंग एडेड है। तो क्वांट के लिए सॉर्टेड है, बट दूसरे सेक्शंस के लिए आपको थोड़ा सा जैट के लिए अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा टेस्ट का। हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैट एग्जाम सर? ओके संदीप, थोड़ा लेट ज्वाइन किया बेटा आपने शायद। ऑलरेडी इस पे हमने काफी डिस्कशन कर लिया है, बट अगेन करेंगे थोड़ा बहुत वापस। सर, मेरा QA LRDI सही है, VARC मैंने अभी तक स्टार्ट किया नहीं है, कैसे स्टार्ट करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड ज्वाइन अ बैच समवेयर। अभी के लिए द बेस्ट यू कैन डू इज ज्वाइन अ बैच। आई एम नॉट सेइंग टेक्स्ट बुक ज्वाइन करो, वी ऑब्वियसली आर देयर, बट दिस सेशन इज नॉट अबाउट सेलिंग अ कोर्स। ओके, ज्वाइन अ बैच। अभी एक ऐसा टाइम चल रहा है कि सारे इंस्टीट्यूट्स वाले एक बैच लेकर आएंगे, एंड दैट वुड बी द लास्ट ट्रेन। बैच ज्वाइन कर लो कहीं भी, और जो भी बैच का डेडलाइन है वो फॉलो करते रहो, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। अगर आप सेल्फ स्टडी करने वाले हो तो 2 दिन बैठ के एक शेड्यूल बनाओ, पूरा का पूरा सिलेबस को ब्रेक डाउन करो पीसेस में, स्मॉलर स्मॉलर एरियाज में, और कब तक क्या करोगे, किस बुक से सॉल्व करोगे, कितने क्वेश्चन करोगे, PYQs कितने करोगे, मॉक्स कहाँ से लोगे, एवरीथिंग हैज टू बी प्री प्लान। एवरीथिंग हैज टू बी प्री प्लान। एंड अगर अगर आपको टॉपिक का गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे चैनल पे सर्च करो, हाउ टू प्रिपेयर फॉर QA, हाउ टू प्रिपेयर फॉर DLR, हाउ टू प्रिपेयर फॉर VARC। हम लोगों ने अच्छे खासे वीडियोस बना रखे हैं ऑलरेडी। और संदीप, ऑलरेडी अच्छे खासे वीडियोस बना रखे हैं डिटेल में कि QA को कैसे प्रिपेयर करना है। एंड अगर आप 4-5 दिन रुकोगे तो अगेन वी आर कमिंग अप विद 4 मंथ प्लान, QA के लिए, DLR के लिए, वर्बल के लिए, तो वो भी आ जाएगा वापस। देखो, व्हेन वी टॉक अबाउट हाई इम्पैक्ट एरियाज ना, तो थोड़ा सा आप इस तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हो। और आपके सामने अगेन एक टेबल है, टेबल में देर आर 5 मॉड्यूल्स ऑफ क्वांट, एंड उसका ना वेटेज गिवन है। तो जिसका ज्यादा वेटेज है उसका इम्पैक्ट ज्यादा है, तो आप मॉड्यूल वाइज देखो। अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा इन 2024, आउट ऑफ 22 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पर आस्क्ड फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड अलजेब्रा। आप इस डायरेक्शन में भी स्मार्टली प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन स्किप कपल ऑफ मॉड्यूल्स, यू कैन स्किप नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथमेटिक्स। व्हेन आई से स्किप नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथमेटिक्स, आई मीन क्रक्स आपको देख लेना है, बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने लेने हैं, बहुत डीप नहीं जाना है। ओके सर, माय बैकग्राउंड इज BSc नर्सिंग, आई हैव बीन स्टडिंग हार्ड, गाइड मी। सर, मैंने मॉक दिया था, उसमें QA 30 और LRDA 39 मार्क्स, बट VRC में 9 मार्क्स आए। VRC में 9 मार्क्स आए। तो VRC इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू आरसीज एंड वोकैबुलरी। किसमें तकलीफ होती है, क्योंकि 9 मार्क्स इज वेरी लेस। VRC में शुड बी एटलीस्ट 30+, एटलीस्ट 30+। एंड सी, आपका 30, 39 एंड 30 इज 199, विच इज 99 परसेंटाइल के ऊपर। फिगर आउट करो वीक एरियाज, टेक हेल्प ऑफ मेंटोर। आपको मेंटोर के साथ बैठना चाहिए तरुण, किसी मेंटोर के साथ आपको बैठना चाहिए। इफ यू आर इनरोल्ड समवेयर, आस्क द इंस्टीट्यूट कि मेंटोर के साथ आपको 15-20 मिनट दे। फिगर आउट योर वीक एरियाज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका डाउट थोड़ा स्पेसिफिक है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डोंट ओवर स्ट्रेस गाइस, डोंट ओवर स्ट्रेस। यू नीड टू क्रिएट अ शेड्यूल जहां पे ना रेगुलर इंटरवल पे ब्रेक लेना है आपको। सर, इनइक्वालिटीज ग्राफ्स का क्लास, इनइक्वालिटीज का हो गया ना क्लास, देखो चैनल पे।
इनइक्वालिटीज का आरसीज आरसीज तो आरसीज में बेटा यू हैव टू अटेम्प्ट, वो डीएलआर के सेट की तरह है, यू नीड टू गो थ्रू एज मेनी आरसीज एज पॉसिबल। उसका तो दैट इज द ओनली वे। एक एक अच्छे फैकल्टी के साथ, वी हैव रितु दुधुरिया मैम, आई हैव अटेंडेड मेनी ऑफ हर क्लासेस। रितु दुधुरिया मैम के साथ आरसीज डिकोड करो ना, फ्री में, फ्री के क्लासेस है वो, यूट्यूब पे फ्री के क्लासेस है, लाइव मैडम आरसी डिकोड करती है। वो आपको हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। लाइक सेट डीएलआर में क्या होता है, वंस यू आर डन विद द ट्रेडिशनल टॉपिक्स, ग्राफ्स कर लिया, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स कर लिया, रूट्स एंड नेटवर्क्स कर लिया, वेन डायग्राम कर लिया, वंस यू आर डन विद द ट्रेडिशनल टॉपिक्स, you move on to puzzles, you keep on solving set. Every day you can find something new in a set, और फिर आप सीखते जाते हो, और प्रैक्टिस के साथ you get sharp enough to find out the cases, और फिर वो होने लगता है एक टाइम के बाद। आरसीएस के साथ भी वैसा ही है। आरसीएस इज लाइक सेट ऑफ ग्राफ। ऋतु दुधुरिया का मैम डेली 5 बजे क्लास आता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे डेली अटेंड करो ना। अभी तक क्या किया आरसी के लिए ये भी बताओ, मतलब व्हाट यू हैव बीन डूइंग ऑल दीस डेज। मीनवेल गाइस, टेक ब्रेक्स। आई कंडेम यू सिटिंग फॉर मोर देन 2 आवर्स। 2 घंटे से ज्यादा ना बैठना है, ना 2 घंटे से ज्यादा कुछ अटेंड करना है। 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे वंस इन अ वीक, अगर 4-5 घंटे बैठ रहे हो, या किसी फैकल्टी का 4-5 घंटे का मैराथन देख रहे हो, 3-4 घंटे का, वंस इन अ वीक। बट डेली बेसिस पे यू शुड नॉट बी सिटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और दैट इज इनएफिशिएंट। इट सीम्स टू बी एफिशिएंट बट दैट एक्चुअली इज इनएफिशिएंट। आपको 2-2 घंटे की सिटिंग के बीच में एटलीस्ट 40-45 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। एंड यू नीड टू एक्सरसाइज। सर क्वांट का कितना क्वेश्चन वुड बी सफिशिएंट टू रीच मिनिमम कट ऑफ? अगेन देखो, टू हेल्प यू विद दिस आई हैव दिस टेबल। कट ऑफ, फॉरगेट अबाउट कट ऑफ, जस्ट सेकंड गाइस, हाँ फॉरगेट अबाउट कट ऑफ। सी आपको कितने परसेंटाइल पे, कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल, व्हाट परसेंटाइल यू आर टारगेटिंग? at least 90 percentile should be the target. For that you need 17, roughly 17-18 marks. You need 17-18 marks, so 18 marks is 6 questions. Okay, तो इतने तो चाहिए। कट ऑफ की बात मत करो, 90 परसेंटाइल आई बिलीव। देखो यू कैन इजिली रीच अप टू 25, मतलब 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22 क्वेश्चंस। 97 परसेंटाइल तक तो आप आराम से जा सकते हो। जस्ट फोकस ऑन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा, फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट एवरीथिंग, फोकस ऑन अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। बाकी सबका बस सुपरफिशियल नॉलेज ले लो, क्रक्स ले लो। हेलो सर, आई एम सृष्टि हियर। आई एम टोटली बिजी विथ माय वर्क टिल 15th of September, 15th of September, October, November, so you have 2.5 months left after that. Due to ITR period, and I am working in a CA firm 10 a.m. to 9 p.m. uh, Srushti, now this is your second year, beta. The timings that you have mentioned is 10 a.m. to 9 p.m. and that too you are totally busy. To 9 p.m. के बाद you are completely exhausted. 10 a.m. के लिए 10 a.m. को ऑफिस जाना है, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 7:38, 8 बजे से स्टार्ट करना है आपका प्री प्रिपरेशन ऑफिस जाने के लिए। यू डोंट हैव टाइम टू प्रिपेयर। I don't want to give you false hopes, but the kind of commitment you have, it's very difficult. You don't have time on daily basis. है ही नहीं time, and you need time. You need time. So assuming कि आपने आपने ये कर रखा है, लास्ट ईयर प्रिपेयर कर रखा है, तो द बेस्ट दैट आई कैन गाइड टू यू इज कि सितंबर में जैसे ही आप छूटोगे, सेक्शनल्स देना शुरू करो डायरेक्टली। अस्यूमिंग कि आपने लास्ट ईयर थोड़ा बहुत अच्छे से करा है प्रिपरेशन, सो जैसे ही आप सितंबर में फ्री हो जाओगे, स्टार्ट गिविंग सेक्शनल्स डायरेक्टली। सेक्शनल्स पीवाईक्यूज मॉक्स, सेक्शनल्स पीवाईक्यूज मॉक्स, आपका जो रिवीजन होना होगा वो सेक्शनल्स के थ्रू हो जाएगा। और सर बीएससी नर्सिंग टू एमबीए हेल्थ केयर मैनेजमेंट, विच कॉलेज इज गुड टू टारगेट? ओके, आरसी पढ़ा
नहीं जाता, ज्यादा समझ में नहीं आता है तो छोड़ देता था पढ़ना। अरे नहीं यार, इट्स नॉट डिफिकल्ट। यू नीड टू डेवलप हैबिट, यू नीड टू डेवलप हैबिट। ऐसा नहीं है, वाई वाई टू लीव। जस्ट अ सेकंड। अरे यार, एक मिनट। चैट्स आपके नहीं दिख रहे। चलो, फाइन। मॉक टेस्ट के मार्क्स में बहुत वेरिएशन का रीजन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इट वेरीज फ्रॉम 45 टू, लैक ऑफ प्रैक्टिस है ये, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। नॉट प्रॉपर एनालिसिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस। ये इतना रैंडम नहीं होता है, मार्क्स इतना नहीं वेरी करता है। लैक ऑफ प्रैक्टिस है ये। मतलब लैक ऑफ, मैंने से लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने टॉपिक्स प्रिपेयर करे हैं लेकिन हर एक टॉपिक को डेप्थ में नहीं किया है। इजी मॉक आता है, इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं। जहां भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है, यू स्टक। ओह, entrepreneurship, finance, I would recommend finance pursue करो। इन दैट केस, अगर आपको entrepreneurship में ज्यादा इंटरेस्ट है तो बेस्ट स्पेशलाइजेशन वुड बी finance, या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यू कुड गो फॉर। ओके। हाँ गाइस, आई वाज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ केयर। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यू नीड टू टेक ब्रेक्स। डोंट commit a sin by attending, uh yeah, sitting for 4 5 6 hours in a stretch. Don't do that, that is inefficient। that gives you a feeling कि मेरा प्रिपरेशन हो रहा है, बट वो आपको शॉर्ट टर्म में भी आपको इनफिशिएंट बनाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ऑल्सो इट इज नॉट गुड। ओके, सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग, इफ यू हैव डेडिकेटेड 6 to 7 hours, उसको एटलीस्ट 3 सिटिंग में आपको कंप्लीट करना है। अ, आपको ऐसा नहीं है कि 1 बजे से 5 बजे तक बैठ गए, फिर हाफ एन आवर का ब्रेक लेके फिर 5:30 को बैठ गए 8 बजे तक। डोंट डू दैट। एक्सरसाइज एंड रिलैक्स करना इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 6.5 to 7 hours ऑफ स्लीप। गो टू बेड ऑन टाइम। 11 साढ़े 11 12 बजे तक बेड पे चले जाओ। मॉर्निंग में थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, वॉकिंग वॉकिंग से शुरू करो, इंपॉर्टेंट है। और दैट इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ। 40 45 मिनट्स का वॉक, हाफ एन आवर से स्टार्ट करो, 40 45 मिनट तक वॉक करो। दैट इम्प्रूव्स योर मेंटल हेल्थ। आई एम टारगेटिंग 99 परसेंटाइल इज बिल्कुल पॉसिबल इफ यू वर्क इन द राइट डायरेक्शन। व्हाई नॉट? इट्स ट्रूली पॉसिबल। आई मीन, इफ यू हैव डाउट तो डिफिकल्ट है। अगर आपको खुद पे डाउट है तो इट इज डिफिकल्ट। देयर इज सिस्टम इन प्लेस। इफ यू हैव सेल्फ बिलीफ एंड इफ यू आर विलिंग टू वर्क इन द राइट डायरेक्शन, बिल्कुल पॉसिबल है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के लिए जो गुड कॉलेजेस दैट आई कैन थिंक ऑफ इज सिम्बासिस है, केजे समैया, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो हाँ, बिल्कुल हो जाएगा यार। इट्स वेरी गुड। थोड़ा कम पे भी चलेगा। एंड सर, 8 a.m. 8 p.m. job timing max could give 3 to 4 hours a day. Daily trying my Navdeep, plan your 3 to 4 hours थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में। 3 to 4 hours फॉर नेक्स्ट 2 2.5 months कुड वर्क। उसके बाद आपको और टाइम मैनेज करना पड़ेगा। एज आई सेड, सेबैटिकल लीव ले लेना। ठीक है। 3 to 4 hours में यू कैन मेक थिंग्स हैपन। बट हाँ, अगेन बस बुक खोल के विदाउट एनी डायरेक्शन सॉल्व मत करते जाओ क्वेश्चन। दैट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। सर, विद द जर्नी बीइंग सो चैलेंजिंग, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल टाइम्स ड्यूरिंग द प्रेप? अगेन, लाइक
the best reason is think why you started all of this. ठीक है? Do you want to stay where you are right now? Do you want to? अगर आप if you're not gonna work, so things are going to stay as it is. Nobody else is going to do that for you. आपको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है. ओके, तो एंड मोटिवेटेड रहने के लिए ना एक चीज और है, कीप टॉकिंग टू योर पेरेंट्स. आई फर्मली बिलीव कि आपके पेरेंट्स से हर दूसरे दिन 15-20 मिनट बातें करते जाओ. ठीक है? and you will be motivated. They are the best sources of motivation. The only people who are going to get happy with your success apart from you is your parents. Okay. And also motivation का कैसा है बेटा, कि अगर आपको आपके दिस इज योर ड्रीम, राइट? नोबडी एल्स इज फोर्सिंग यू. आप आज के जमाने में नोबडी फोर्सेस एनीबडी टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स या कुछ. ओके, so you have chosen this path. एंड अगर आपके चूज किए हुए पाथ के को फॉलो करने के लिए यू नीड मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट मेक्स नो सेंस, राइट? थिंक अबाउट इट. आइदर गो ऑन सम अदर ट्रैक जहां पे आप सेल्फ मोटिवेटेड रहो. सेल्फ मोटिवेशन इज द ओनली मोटिवेशन दैट यू नीड. आपका आपका ड्रीम है, आपने चूज किया है, एंड उस ड्रीम को अचीव करने के लिए यू नो व्हाट नीड्स टू बी डन. अब वो व्हाट नीड्स टू बी डन करने के लिए यू नीड मोटिवेशन फ्रॉम आउटसाइड. हाउ सिली इज दिस? एक बार सोचो जरा. एंड गाइस, यहाँ पे ना देखो, स्टे मोटिवेटेड तो आई हैव डिस्कस्ड. Review and adjust. You need to keep on reviewing your performance, and you have to be flexible. When I say flexible, what do I mean? Things might not go your way. आप जैसा प्लान कर रहे हो, आपने जैसे एक महीने पहले प्लान किया कि एक महीने बाद मुझे ये कंप्लीट करना है, तो एंड इवन आफ्टर पुटिंग योर 100%, देर आर चांसेस कि थिंग्स जो है वो थोड़ा सा ना या तो डिले हो गई या कुछ ऐसी चीज होगी जो आपके हाथ में नहीं है. तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल. आपको फिर से एक प्लान बनाना है, बट प्लान हमेशा आपको इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि आप हर बार उसको अचीव नहीं कर पा रहे. बट यू हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी. कल तो कभी नहीं आता, वी नो दैट. आपने एक प्लान बनाया और 2 हफ्ते तक उस प्लान को फॉलो नहीं किया, फिर एक नया प्लान बनाया. सो दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आपने एक प्लान बनाया, यू वर्कड टुवर्ड्स इट, बट आप वो अचीव नहीं कर पाए. तो यू कैन रीस्ट्रक्चर, बी फ्लेक्सिबल, एंड दैट कुड गो बोथ साइड्स. हो सकता है कि आपने 15 डेज का चीज, द टारगेट ऑफ 15 डेज इज अचीव्ड इन 12 डेज. अगेन यू हैव टू रीस्ट्रक्चर it. There could be possibility कि 15 days का target is achieved in 20 days. Again you have to restructure, but provided you are putting your 100%. अगर आप बस ऐसे टाइम पास कर करके स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर करते जा रहे हो, that is going to take you nowhere. एक देखो, जस्ट टू हेल्प यू गाइस, जस्ट टू लेट यू नो कि अगर अगर if you want a structured preparation, तो batches are gonna help for sure. I've told that multiple times. So we're starting a batch, achieve batch. I'm just showing you कि बैच में किस तरीके से चीजें होती है. दिस बैच का स्टार्टिंग डेट वाज 2 जुलाई. सो क्लासेस 2 जुलाई से शुरू हो गई है. ओके, 8 जुलाई के आसपास से फुल फ्लेजेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी. ओके, एंड इस बैच में इफ यू ज्वाइन दिस बैच, लेट्स से यू हैव ज्वाइंड दिस बैच, तो आपको करना कुछ नहीं है. सेशन में आओ, फैकल्टी जो भी टॉपिक डिलीवर कर रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. ओके, डोंट कीप एनी डाउट्स, डोंट पाइल अप योर डाउट्स, दैट वुड बी अ सिन. एंड जो काम दिया जा रहा है, फिनिश दैट बिफोर डेडलाइन, एंड प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करते रहो बचे हुए टाइम में. Automatically you will reach to your goal. Everything is structured in this batch. We are offering more than 170 classes. आपके सामने जो स्क्रीन पे है is schedule of each classes that we are going to conduct. Schedule of each classes that we are going to conduct. Okay, so देख सकते हो बहुत सारी classes planned है, and these are going to start. These have already started from 2nd of July. आज 4th of July है, right? And this batch we will wrap up
जुलाई है ना, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर एंड तक वी विल रैप अप दिस बैच, so that you will be left with 2 months. And उस 2 months में we will revise, we will have booster courses, we will attempt mock strategies, we will work on all of that. So we have time. So this is one way to prepare nicely for your CAT examination. Okay, what I'm showing you is all the topics lecture wise on the screen जो इस बैच में होने वाले हैं. इतना छोटा छोटा है, so many classes in 3 months. All you need to do is to follow all these classes, and in class में जो आपको sheet दिए जाते हैं, do that before the deadline, and things will go your way. Okay, we have this Achieve IM batch which you can join. इसका link description में है. If you have any queries regarding anything, तो उसका भी link description में है, Google form है, you can fill in that. And not only that, chalo, if you are not willing to join a batch right now, not prepared, halaki there is no time to goof up, but say you are not prepared, so but still you have some doubts, you want to get your doubts clarified, so there is a link in the description jahan pe you fill the topic that you want classes on, and we will conduct free classes on the topics especially for you इन द फॉर्म ऑफ मास्टर क्लास. ओके, आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है, इंस्टॉलमेंट्स में डाउट है, सर मुझे ना रूट्स एंड नेटवर्क्स में डाउट है, आई एम नॉट गुड विथ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, आई एम स्ट्रगलिंग इन आरसीज, तो फिल इन ओवर देयर एंड वी विल कंडक्ट मास्टर क्लासेस स्पेसिफिकली फॉर यू. इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. नो चार्जेस, योर डाउट्स आर क्लासेस. ओके, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. एंड हाँ, स्टे कनेक्टेड विथ अस. वी कम लाइव ऑन डेली बेसिस ऑन यूट्यूब, वी कम लाइव ऑन डेली बेसिस ऑन यूट्यूब. आप यूट्यूब पे आते जाओ. वी कंडक्ट एकेडमिक क्लासेस वीकडेज पे. संडे को जनरली वी कंडक्ट स्ट्रेटेजिक क्लासेस, मंडे को वी डू मॉक एनालिसिस. तो एक पूरा का पूरा पैकेज है यूट्यूब के ऊपर, एक पूरा का पूरा पैकेज है यूट्यूब के ऊपर. पूरे वीक में we do conduct strategy classes as well. We have live mocks. We conduct marathons. जैसे yesterday today only, Ritu ma'am conducted VARC का marathon. Last Sunday I conducted arithmetic का marathon. We are planning for DLR marathon in coming days. On weekdays we go topic wise. Amit Surana sir takes a very great good set on daily basis. I am taking permutation and combinations right now on daily basis. I have covered all the topics in the past in the Scratch batch. You can go and watch it on the Testbook channel. It's completely free of cost. जहाँ पे theory है, questions है, everything is there. And sessions में also we come to talk. There should not be only talk, 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 talk. There should be academics, learnings, and then talk. That will help you more. So I would strongly recommend कि sessions में भी आते जाओ. We will learn and we will prepare strategies side by side. Okay, because I need to know you more, right? अगर मुझे तरुण को गाइड करना है, अगर मुझे नवदीप को गाइड करना है, right? तो मुझे पता होना चाहिए कि नवदीप में प्रॉब्लम क्या है. नवदीप नवदीप स्टक्स इन कंसेप्ट, और नवदीप का कैलकुलेशन इशू है, या नवदीप को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, वर्बल इशू है. I've seen all kinds of problems, right? I don't know what is the problem. What is the problem कि Aryan scores 45 in one test and 92 in one test. There could be multiple reasons. I could have guided more specifically अगर मुझे Aryan के बारे में थोड़ा और पता रहता. उसके लिए Aryan, if attends couple of sessions with me, I'll come to know कि what is the problem with Aryan. Aryan अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, छोटा क्वेश्चन अटक जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस में. There could be multiple reasons. So come down to sessions. Okay, let's be more familiar. Sessions where obviously you are gonna learn something, and I'm gonna learn about you, and so that I can guide you in a better way. Not only me. Oh, we have Surana sir, we have Ritu Dozoria ma'am. We all combined have experience of 35 plus years. I have got 13 plus years of teaching experience. Same goes with Surana sir. Same goes with Ritu ma'am. Together, all of us, we bring 35 years of experience on table. Now it's up to you how much to grab. Okay, come down to sessions as well. This is what I will say. And I cannot see any new questions now. And yes, time is also up. I hope
You liked the session, कुछ आपने सीखा, ठीक है. I came up with some points that would help you definitely to manage your time for working professionals. Let's meet in the sessions. Moving forward, आते जाओ. This is not done. We are here. We will be there with you till the examination. Even after examination, जब तक आपका सिलेक्शन कहीं नहीं हो जाता, एडमिशन कहीं नहीं हो जाता, सिलेक्शन कैट और द डी डे इज ओनली 50% ऑफ द जर्नी. उसके बाद जीडी है, पीआई है, वैट है, सब कुछ है. ओके. The marks is only 50%. The cat scam and the percentage is only 50% of your journey. Sorted? Chalo, guys. Welcome, Srushti. Chalo, have a great day ahead. This is Ashish Kumar signing off from this session. This is one session. There would be more sessions coming. I meet with you on daily basis. मिलते हैं वापस इस channel पे within 24 hours. Till then, have a great day ahead. Signing off for this session, guys. Shala. Record